Or invest his sum of money for 2 years at 10% at SI. Then SI is rupees 100. He invests again the total amount for 2 years at CI and earn a total profit which is 45.2% of sum invested by his in SI. 10% for 2 year 16,000 is the 20%. 16,000 is the 20%. So 100% 25 16 5 ja 80,000 rupees invested by Amar. Total profit is 45.2%. तो 80,000 का 45.2% is equal to 36160 rupees is the total interest. But SI का interest has 16,000. तो 16,000 minus 20160 rupees is the CI. Is the answer. The ratio of amount for 2 years for a sum under compound interest annually and for 1 year under simple interest is 6:5 and the rate of interest is same. Amount is equal to P1 plus R by 100 time for CI and for SI. Amount is equal to P plus PR T upon 100. P1 plus R by 100 for 2 years is equal to 6/5. P plus PR T by 100. PP common है. P1 plus R by 100 square divided by P common time 1 plus R by 100 is equal to 6/5. इससे ये कैंसिल, P से P कैंसिल, तो 1 plus R by 100 is equal to 6/5. R by 100 is equal to 6/5 minus 1. 5 1 is 5 and 1 by 5. R by 100. 5 2 is 20. R is equal to 20%. Sum invested for 3 years 20%. 20% is 1/5. तो फर्स्ट ईयर 5 3 इयर्स के लिए क्यूब 5 का क्यूब 125 6 का क्यूब 216. टोटल अमाउंट विल बी 17280. टोटल अमाउंट है 17280. तो 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 17280 डिवाइड बाई 216. 216 8 जा 1 यूनिट इज इक्वल टू 8. तो प्रिंसिपल होगा इसका 8 times 80. 125 multiplied by 80 10,000. 10,000 rupees is the answer. Ram and Shyam invested same money at SI at 14.27% per annum for 1 year. Ram invested total received amount at CA for next 3 year rate of interest for first, second and third year 12.2%, 16.3% and 24% respectively. Shyam invested total received amount at SI for next 2 years with 12.2% rate of interest. 14.2% is equal to 1/7. 12.2% is equal to 1/8. 16.3% is equal to 1/6. 25% is equal to 1/4. राम एंड श्याम इन फर्स्ट ईयर 7 से 8 हो गया. 7 से 8 1/8. 8 से 9 हो गया. नेक्स्ट ईयर में राम का 8 से 9 हो गया. 6 and 1 7. 6 से 7 हो गया एंड 25% 4 से 5 हो गया. 8 से 8 कैंसिल. 7 से 7. 3 3 जा 9. 3 2 जा 6. 4 2 जा 8. 5 3 जा 15. ऐसे फॉर नेक्स्ट 2 years 12.2% 1/8. 8 से 9 हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर बट मल्टीप्लाई बाई 2 फॉर 2 years 2/8. 8 और 2 10. 8 से 10 हो जाएगा फॉर 2 years. 8 से 8 कैंसिल. 7 and 10. इन्वेस्टेड सेम मनी के लिए
यहाँ सेम होना चाहिए. मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 8, 8 7 जा 56, 15 7 जा 105, 7 8 जा 56, 10 8 जा 80. रिसीव्ड अमाउंट है 105 एंड 80. डिफरेंस है 105 माइनस 80 इज इक्वल टू 25, बट डिफरेंस 25 नहीं है, 7200 है. ये रिप्रेजेंट करेगा 7200. 1 यूनिट होगा इक्वल 7200 डिवाइड बाई 25, 25 4 जा 72, 2 जा 144, 144 2 जा 288, 288. 1 unit is equal to 288. Invested earlier 56. 288 multiplied by 56. 16128 rupees is the answer.